हाय एवरीवन, आई हैव अ ब्रेकिंग न्यूज़। अभी हमारे ऑफिस खुलने वाले हैं तो हमें ऑफिस जाके काम करना पड़ेगा। तो अभी पूछते हैं जेक से उनके क्या ख्याल है। और भाई ठेकेदार, बड़े मज़े ले लिए, सनसेट में बैठ के मसाज ले रहे हो। अभी ऑफिस खुलने वाले, जाना पड़ेगा, उसके बारे में क्या ख्याल है? बेबी यार, आप क्यों बार बार जले पे नमक छिड़क रहे हो यार? क्यों याद दिलाते रहते हो? याद क्यों ना दिलाऊं, प्रेस किए कपड़े। I know, but it's so much fun working from home. We get to spend time together. बाय द वे, एक वो और कॉन्वर्सेशन जो चल रही है 4 days अ वर्क वीक की, उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ तेरे मुंह में घी शक्कर। 4 ही दिन ऑफिस जाना पड़ा ना तो भी मैं खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। If 4 days work week will be better than anything else. That's so true. ये पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ? There are certain companies in Australia which are already doing it since last couple of years, and they find it very productive for their company and even healthy for employees. वहाँ से कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जो एडवोकेट है जिसकी वजह से ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कशन हो रहा है, दैट इज one and only New Zealand Prime Minister Jacinda. I totally love her. Hail Jacinda. So उसका जो reason था, productivity is another thing. It's a minor part of her thought process. But जो उसका main reason है कि अभी जैसे सब कुछ बंद हो गया. न्यूजीलैंड इज़ अ टूरिज्म बेस्ड कंट्री, तो वीज़ा वगैरह ट्रैवलिंग इज़ नॉट वेरी मच यू नो इन ट्रेंड राइट नाउ. तो व्हाट शी थॉट इज़ दैट इफ she can have 3 days a week off for working employees, then they can spend more time with their families. और local जो tourism है ना, that can cover the gap and make economy stronger. That would be wonderful. So that's her reason, and I think अभी 1-2 साल तक ऐसे ही रहेगा. थोड़ा सा लोग डरेंगे. So I think it's a very good idea. Everyone should be thinking about it and forget about like everything. I think it's very healthy. आजकल जितना वर्क स्ट्रेस और वर्कलोड और इतनी सारी चीजें चल रही है, I know ये वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा. इनफैक्ट गाइज, I want to ask you all that what is your preference? Do you like going to work for 5 days or would you prefer a 3 or 4 days work week? For 3 days? You want to go and work 3 days only? ये अपनी हल्दी की फांक. Funk. नींबू. बीटरूट, कैरेट. सुंदरता और स्वस्थता का अमृत. इतनी बची हुई है. Okay, we'll buy today. ओके, तो पहले तो इस करेले को निपटाते हैं. अच्छा, ये भी बता ही दो ना, why do we drink करेला every morning? करेला देखो, सबसे पहली चीज तो है कि एक ब्लड क्लेंजर होता है. आपका जो खून है उसको साफ रखता है. उसमें जो भी टॉक्सिन्स है ना, लेड, एल्यूमिनियम, मर्करी, ये टॉक्सिन्स हमारे एनवायरनमेंट से आ जाते हैं. चीयर्स एवरीवन. Yuck! आज ना बेबी मैं वेट मेजर कर रही हूँ, काफी चिंतित हूँ मैं. अच्छा. लेट मी स्टार्ट माय ऐप. कितने दिन हो गए आपको करे हुए? मैं 1 वीक से तो कर ही रही हूँ, लाइक एवरी वीक. अरे ये क्या है? क्या रहा रिजल्ट? कितना आ रहा है? That's not fair, man. Seriously. कितना है? कम ही नहीं हो रहा, बढ़ गया है. I moved from 75 to 69. Now I'm back to like 71. And आपको पता है कि I am going for 10,000 steps every day since last 1 month. I know, but remember I told you that your muscles for your legs are increasing. So body weight does not always mean fat. You need to see fat loss. Fat loss के point of
ये देखा है। अरे ये भी खत्म हो जाएगा ना, कोई अब वॉकिंग से स्पॉट रिडक्शन थोड़ी ही होती है, धीरे धीरे सबकी बॉडी पे अलग रिस्पॉन्स आता है। आपको कम से कम अपने आप को 3 महीने और देने पड़ेंगे। Let's see, I'll keep doing it. I can't give up in Exactly, that's what you need to remember. You need to keep doing it. I've been doing it for 15 years. वॉक पे चले। Let's go. वो जो वाइट शूज है ना वो मुझे चेंज कराने हैं। मैं ले तो आई बट आई वांट ब्लैक। मेरे पास ऑलरेडी वाइट शूज है। बेबी वो दुकान पे क्या जूतों का कलर काला दिख रहा था जब लिए थे, तब भी तो सफेद ही दिख रहा था ना। पता नहीं था आपको क्या कि सफेद जूते घर पे भी हैं। रेल बना रखी है यार, एक बार खरीदवा के लाओ, एक बार बदलवा के लाओ। डेनी, you little lottery freak. Did you I take my chances and I love it. I'm Is there just anything checking. You got it? I like to take my chances. Wow, baby. What? You won? I won $10. I'm so happy. Let's go and cash it. Okay. So now I'll show you what all goes into my bag when I go to work. First of all, let me share that I am not a handbag person or a wallet person. I carry a whole bag with me. And the best part is that me and Jake, we both work in the same office. So a lot of things are like, shared. So show this to everyone. So I have a planner and a book which always goes. I prefer pencil instead of pen. And my laptop and the accessories goes this camera and a small tripod. Then I use body mist, not really the deos. The glasses, these days we have mask. I carry like a pain relief, 2 caps. You never know when you have to go through sun. This is my bag. This is my favorite bag. Since India, no? Yeah, I bought this from India and it's very lightweight and very tough. And I love the color. Let me show some very interesting things that I put in my bag. The first thing is this. This is a multi-purpose toiletries carrier bottle. It's quite popular in Canada these days. I bought this on a recommendation. So it's quite handy. I'll show you. There's a small mirror. There's a small hand towel and it's a microfiber hand towel. I prefer washing hands rather than using sanitizers and I am big on that. I might wash my hands every hour or so. Another thing which is very nice in this that they are these two bottles. They are like 45 ml. I use hand wash and moisturizer in one each. You can use whatever. Some people put their hand sanitizers, but I prefer hand wash and a moisturizer. Another thing which is quite handy, it's very small, but there is a comb. You never know when you might need it. And this is another compartment where I put in my toothbrush and a travel small pack toothpaste. Other things is that I put a lipstick, I put my lens. A pair of lenses is always necessary, extra lens is always required. So this all fits into one small compact bottle. I just love it. It's pretty organized. I don't have to put my hands into the bag all the time. See, it just fits everywhere. It's very small. Just goes there. That's it. I thought instead of $10 cash, I'll rather take more chances and buy more lottery. तो कितनी डॉलर्स की लॉटरी और ले आए? $10. This is what I exchange it for. Okay. Wish me luck. All the best. As you can see that all the seats are empty.
even though the food court is open. The reason is that only takeaway is allowed. So today we are going to try, after a long time, naan kebab. Let's go and eat. So is this where we are going to do lunch? यस डेमी, तुझे और क्या चाहिए? एक लड़की के लिए बता। पॉल्डो के जूते आ गए, रेस्टोरेंट से खाना आ गया। मेरे तो मजे, आप अपना बताओ। आई एम हैविंग फन, लेट्स एंजॉय दिस फूड एंड What do you have? I have this vegetarian meal. I'll just show it to you. Paneer, rice, chickpea, and there we have this naan. Oh man, it's just so yum. Let's eat it all. So guys, this was our week. We are preparing for work and having last fun while we are working from home. So what about you guys? Share with us how's it going in your life. अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। Bye bye.